Good morning, team. Our coverage on City Union Bank, Varun has already discussed, but we like other banks also, like Bank of Baroda, Can Bank, Federal Bank, IndusInd Bank, ICICI Bank. These stocks also in next 2-3 months, we expect more than 10 to 12% return. It can be higher also. Mahindra and Mahindra had a conference meeting with a broker. So they uploaded a presentation. In that presentation, very important, they said they will clean up legacy businesses. Already we saw the green energy business. Now they have given some stake to a pension fund. So they are trying to unlock value for the 10 private listed companies. And they have also said in the presentation, by FY27, Mahindra and Mahindra expect its electrical SUV penetration to be 20 to 30% of its overall portfolio. Now today SUV market share is 17.1%, and Mahindra is the largest tractor brand by volume in the globe. So this is what they have said, and we are also very positive. We expect the stock to target 2,000 rupees in next 18 months. So we have been positive for a very long time, but we continue to be positive on Mahindra, Maruti, TVS Motor, and Ashok Leyland, irrespective of the competition. There was one interesting news on Honda Motors. Honda Motors is likely to bring electric vehicle scooters, EV scooters, in their highest selling brand, Activa. So no, the brand Activa will be priced at 72,000 is what the indication is there in the newspapers, and it will be launched in 23-24. And this will give very big competition for the entry level AV. The likes of Ola and Greaves, they will have very high competition. But TVS is in a niche space, so I don't think their competition going to be there. So we are very negative on Ola Electric and Greaves. If Honda Motors is going to launch Activa, the same name for electric vehicle. Canfin Home MD and CEO Girish Kasogi resigned, stating personal reason, and the stock has corrected post that. And he was very aggressive in the growth of Can Bank Finance. It is a very small finance company, housing finance company, but still the growth was okay. Hudson Agro, they are coming with a rights issue of 400, and the capex point, there was one data which said that FY22 capex rises to 9.11% year-on-year basis, but it is still not up to the mark. But this year, government capex and private capex are very high. Government capex is almost 7,50,000 crores. That is what they are likely to spend. And private capex is 4,28,000 crores. So it is a huge capex. That is why we have been very positive on ABB, Siemens, Cummins, and Honeywell Automation, and few other companies. So we continue to be positive. Any correction is an opportunity to buy in these stocks. Dixon has signed a term sheet for transfer of advanced lighting solution and technological development with IBA, IBAN Illusions. And Jawahar Goel resigned from Dish TV. That is positive for the stock. So that is why Dish TV has rallied, but we don't cover the stock. We don't like this business model. Gravita has got Rajasthan State Export Award for exports. So Gravita is an interesting company. They have 13 eco-conscious state-of-art manufacturing facility in Asia, Africa, and Central America. Then the capacity is 204,000 tons, metric ton per annum. And they buy the Bolt batteries and they extract zinc also. That is one of their business. So very interesting company, but it has already rallied. We like other stocks which are in defense space also, like Mazagon Dock, Cochin Shipyard, BDL, Madani. Still they are rallying. In chemical, Sumi Chemical also looks very good.
UBL is also doing very good. And in cement, after Adani bought cement, Ambuja, ACC, and India Cement are three stocks which are outperforming. I think this outperformance will continue. With that, over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir. And good morning, everyone. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में करने दें। स्टार्ट करेंगे। कल हमने एक नया आईसीआई रिलीज किया है सिटी यूनियन बैंक में, और ये देखा जाए तो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंक है, नियर और 60-70 ईयर ओल्ड बैंक है ये। इनकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो रिटर्न ऑन एसेट 1.5% के आसपास थी FY15 से FY19 में, जो प्री कोविड पीरियड थी। कोविड में इनकी थोड़ी परफॉर्मेंस गिर गई थी और बाकी सारी बैंक भी गिर गई थी एसेट क्वालिटी के चलते। बट अभी हम देख रहे हैं तो इनकी जो लोन परसेंटेज है 16% लोग से कैगर से FY19 से ग्रो हो रहे थे, और इनकी जो ग्रॉस एनपी है वो भी 2 से 3% है। और ये पैंडेमिक ने जो रिजल्ट एसेट क्वालिटी पे इशू किया, वो वहां से भी वे बाहर आ रहे हैं। तो उनकी जो ROE थी जो लोएस्ट थी 1%, वहां से वे अभी 1.5 की तरफ जा रहे हैं। और 15% ग्रोथ के चलते हमें लगता है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी 1.2% ही रहेगी FY22-23 में, और 2.2% ही जो कि 21 में। तो क्रेडिट कॉस्ट भी इम्प्रूव हो रही है। हम अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो प्राइस टू एवरेज बुक वैल्यू 1.7x है FY24 के एस्टिमेट्स में, और अभी करंटली हमें लगता है कि ये आराम से 2.2 तक जा सकती है। इसकी जो वैल्यूएशन थी वो 2.9 तक गई थी, जो इसका पीक था 230-240 लेवल्स के आसपास है। तो उस हिसाब से ये अच्छा दिख रहा है स्टॉक इस करंट बेसिस पे, और 230 का हमें इस प्राइस टारगेट लगता है। और यहाँ से देखा जाए तो 178 का भी करंट भाव चल रहा है, वहां से 30% की और अपसाइड है। सेकेंड अपडेट देखेंगे टीसीएस पे। टीसीएस ने अनाउंस किया है इजराइल के साथ जो उनकी क्रेडिट यूनियन है उन्हें सिलेक्ट किया है प्लेटफॉर्म उनका डेवलप करने के लिए, जो कि इनोवेटिव डिजिटल बैंकिंग सर्विस ऑफर करेगी। डील साइज कुछ डिस्क्लोज नहीं की गई है, बट ये पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा विद रिस्पेक्टिव रेवेन्यू बैंकिंग के लिए। थर्ड देखा जाएगा तो टीवीएस मोटर्स ने अपनी जो एंटॉर्क है 125 वो नेपाल में लॉन्च की है। नेपाल की ये ट्राइट टोन का थीम के साथ इसे लॉन्च किया है, और इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस 3,05,000 नेपाल रुपीस में है ये। बेसिकली ये इसमें वॉइस असिस्ट फीचर रहेगा और कस्टमर को एंगेज करेगा स्कूटर थ्रू वॉइस कमांड्स के साथ। और इसमें ऑप्शन रहेगा 2 राइडिंग मोड्स के लिए, रेस मोड और स्ट्रीट मोड के लिए, जिसकी टॉप स्पीड 98 kmph रहेगी। नेस्ले एफएमसीजी सेक्टर में देखा जाए तो नेस्ले ने कहा है कि वे डिस्कशंस में है कि एक्वायर करने वाले योगा बार को, जो कि न्यूट्रिशनल पैक स्टार्टअप है, और वे टारगेट भी कर रहे स्मॉल डील्स और हेल्थ सप्लीमेंट स्पेस में। योगा बार करंटली प्रोटीन बार, मुस्ली, पीनट बटर, वे प्रोटीन और ग्लूटेन फ्री ओट सेल करता है। करंटली इस कंपनी की वैल्यूएशन देखा जाए तो 400 से 500 करोड़ के आसपास की है, और योगा बार की जो देखा जाए डिस्कशन हमने किया है वहां से वे 25 से 20 से 200 करोड़ के आसपास तक वहां से रेज भी करेंगे। थर्ड अपडेट देखा जाए तो मैरिको ने कहा कि उनको लगता है कि इनके जो वॉल्यूम्स है FY23 में थोड़े से ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होने की वजह से। और हाउएवर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रहेगा वो कंटिन्यू करेगा सेकंड क्वार्टर में भी, और हाई कॉस्ट का इन्वेंट्री जो उन्होंने खरीदा है थोड़ा सा वो ईज ऑफ नहीं पास ऑन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो करंट प्राइसेस के चलते हैं। और मैनेजमेंट को लगता है रूरल डिमांड है वो अच्छे से ग्रो कर सकती है अक्टूबर-नवंबर 22 में। और कंपनी ने टारगेट किया है कि डिजिटल ब्रांड्स को भी वो प्रमोट करे, एक्वायर करेंगे 1 से 1.5 साल के अंदर। करंटली जो उनके पास डिजिटल ब्रांड्स है वो बियर्डो है, जस्ट हाउस और ट्रू एलिमेंट्स है। सो इससे रेवेन्यू देखा जाए तो 100 मिलियन के आसपास तक का रेवेन्यू उनसे वहां से जनरेट कर सकते हैं। और अगर मीडिया सेक्टर में देखा जाए तो अप्रैल मंथ में रिलायंस और वायाकॉन ने एक पार्टनरशिप की थी बोडी ट्री सिस्टम के साथ, और इसमें इसमें जो इनका जियो सिनेमा OTT है और वायाकॉम का जो बूथ है, सो उसे कल CCI से अप्रूवल मिल गया है मर्जर के लिए। और इस मर्जर के बाद जो जियो सिनेमा का OTT और वायाकॉम OTT है तो कोई हर्डल्स नहीं रहेगी। सो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा TV 18 के लिए, जो कि 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है नेटवर्क 18 को। सो एक पॉजिटिव न्यूज है दोनों स्टॉक्स के इसके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज ने नालंदा इक्विटी फंड ने 29 लाख शेयर्स बाय किए हैं 2.6% स्टेक ओपन मार्केट से, रफली प्राइस 270 के प्राइस पे ने लिया है। सीएट ने भी कहा है कि कंपनी ने NCDs इशू किया है, और 150 करोड़ के आसपास का ये NCD प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में इशू किया गया है। नाटको फार्मा की जो कंपनी अलाउ किया है जो CTPR है, वैसे फॉर्मुलेशन के थ्रू जो नॉन इन्फ्रिंजिंग प्रोसेस है, और इन्हें एक ऑर्डर भी मिला रिसीव मिला है दिल्ली हाई कोर्ट से उसे लॉन्च करने के लिए। CTPR का जो टेक्निकल देखा जाए तो फॉर्मुलेटेड ब्रॉड बेस्ड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज है, और ये रेंज ऑफ क्रॉप्स और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये है।
रफली देखा जाए तो ये 2000 करोड़ के आसपास का प्रोडक्ट सेल करते हैं इंडिया में। मोमेडाइन की भी देखा जाए तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सितंबर 22 में एक प्रपोजल रिलीज किया है फंड रेजिंग के लिए। हैट्सन एग्रो को भी अप्रूवल मिल गया है राइट्स इश्यू के लिए 400 करोड़ के आसपास का। बटरफ्लाई गांधीमती में देखा जाए तो कंज्यूमर जो कॉम्पैक्टली कंज्यूमर है उन्होंने सेल किया है अपना 10.72 लाख शेयर या 6% स्टेक, और इनकी सब्सिडी ओएफएस के थ्रू जो कि 20 सितंबर से 21 सितंबर में है, और इसकी फ्लो प्राइस 1370 रखी है। फ्यूचर चेंज सोल्यूशन से भी एक प्रपोजल कॉल ऑफ कर दिया है जो लोग डिस्पोज कर रहे थे अपना वेयर हाउस के लिए, और उन्होंने डिसाइड किया है कि उसको एक्सप्लोर करेंगे दूसरे कोई अपॉर्चुनिटीज के साथ। वीमार्ट रिटेल में भी देखा जाए तो अमनसा होल्डिंग्स ने एक्वायर किया है नियर अबाउट 3 लाख के आसपास शेयर, और एवरेज प्राइस थी 3000 के आसपास की। अभी हम जैसे देख रहे थे बैंकिंग स्पेस में सिटी यूनियन बैंक से, तो दूसरे बैंकिंग स्पेस में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। पीएसयू बास्केट ऑन होल बहुत ही अच्छा है। एसबीआई पे भी आप फोकस कर सकते हो। इंडसइंड बैंक यहाँ से और 10 से 12% तो हमें मिनिमम लग रहा है, बट इससे ज्यादा भी यहाँ से ग्रोथ दिखने को दिख सकती है। कल महिंद्रा महिंद्रा ने एक ब्रोकर के साथ अपना कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था, उसमें उन्होंने कहा कि वो जो उनकी 10 प्राइवेट प्लेस में प्राइवेट कंपनीज है उसे वे धीरे धीरे वैल्यू अनलॉक करेंगे। उसमें से सबसे पहले उन्हें जो उनकी क्लीन एनर्जी बिजनेस है उसको उन्हें अनलॉक किया, जो कि कैनेडियन पेंशन फंड को 20% स्टेक देके। और उन्होंने ये भी कहा कि 2027 तक ये जो ईएसयूवी के मार्केट में 20 से 30% अपना मार्केट शेयर लेके जाएंगे। करेंटली एसयूवी के सेगमेंट में ओवरऑल मार्केट शेयर है 17.1%, और ये जो लार्जेस्ट फैक्टर बाय वॉल्यूम भी बनेंगे पूरे ग्लोब में। और नेक्स्ट 18 मंथ्स में हमें लगता है इसका भाव अभी जो 1200-1300 चल रहा है ये 2000 तक जा सकता है। इसी स्पेस में अगर हमें और दूसरे ऑप्शन देखना है तो मारुति, टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड बिना कंपटीटर के चलते भी बहुत अच्छा है। होंडा ने कहा है कि वे अपनी ईवी स्कूटर एक्टिवा जो है, एक्टिवा का ईवी वर्जन लॉन्च करने वाले और 72,000 के प्राइस रेंज के साथ 2023-24 में लॉन्च कर सकते हैं। सो ये एंट्री लेवल स्कूटर जैसे ओला, ग्रीव्स और ओकिनावा जैसे को थोड़ा सा इशू हो सकता है या कंपटीशन टफ हो सकता है, क्योंकि एक्टिवा का प्रेजेंस बहुत अच्छा है और स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क है। हालांकि टीवीएस को इतना नहीं होगा क्योंकि टीवीएस एक अलग ही नीश स्पेस में है और अलग ही वैल्यू प्रोवाइड करता है ईवी स्पेस में। कल हमने देखा कि कैंफिन होम के जो एमडी एंड सीईओ गिरीश कोसगी जी ने रिजाइन कर दिया। ये कि अग्रेसिव सीईओ थे बैंक के लिए, इन्होंने साइड किया है कुछ पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। अगर हम देखेंगे तो 400 हैटसन एग्रो नहीं, हाँ FY22 में 400 करोड़ का जो राइट्स इशू हैटसन एग्रो इशू कर रहा है उसमें वो अगर गवर्नमेंट की केपेक्स देखेंगे तो नियर अबाउट 7.5 लाख करोड़ है, और उसमें प्राइवेट भी केपेक्स देखेंगे तो 4,28,000 करोड़ है। सो केपेक्स के चलते अगर देखेंगे तो स्टॉक्स में हमें फोकस करना है तो एबीबी, सीमेंस, क्यूमेंस और हॉनीवेल ऑटोमेशन जैसे स्टॉक्स में हमें फोकस करना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने भी एक टर्म शीट साइन की है एडवांस लाइटिंग सोल्यूशन जो कि ईवा सोल्यूशन है, और इसके इनके साथ जवाहर गोयल जी ने भी रिजाइन कर दिया डिश टीवी के। हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज और कल हमने स्टॉक में भी अपडेट देखा, पर ये हम दोनों ना स्टॉक और सेक्टर मतलब ये जो कंपनी उसको ट्रैक नहीं करते ना से हम सलाह देंगे। ग्रेविटा को भी एक राजस्थान स्टेट से अवार्ड मिला है, इनकी जो इसके लिए अवार्ड मिला है, और इनके पास टोटल देखा जाए तो 2,04,000 टन की मेट्रिक कैपेसिटी बेसिकली गोल्ड और बैटरी में से और जिंक एक्सट्रैक्ट करती है। और डिफेंस स्पेस में अगर हमें देखना है तो मजगांव और बीडीएल, मिठानी जैसे स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए। और सुमी केमिकल स्पेस में अच्छा लग रहा है, यूबीएल और सीमेंट स्पेस में अभी अंबुजा एसीसी के बाद इंडिया सीमेंट्स में भी हम फोकस कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा स्टॉक ले सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। The technical and derivative update. On technical front, yesterday Nifty opened on a flat note and then witnessed a buying momentum from lower levels and closed around 17,600 levels. Daily chart Nifty formed a bullish candle with a lower shadow, which indicates buying at the support levels. On the sectorial front, if we see, trend was a mix. Banking, FMCG and auto witnessed a buying interest, while reality and metal were on the back foot, and even Nifty mid cap and small cap underperformed compared to the frontline index. So now immediate support for the Nifty at 17,400 levels. If that breaks, then 17,100 levels can be possible. While for the upside momentum, 18,100 levels will be the hurdle. And as per hourly chart, if Nifty crossed yesterday's highs, which is 17,677, then intraday today bounce cannot be ruled out.
So on the Bank Nifty front, Bank Nifty traded almost yesterday in sideways range, but looking strong, especially yesterday PSU Bank witnessed a buying momentum, which is close around 2%. So SBI Bank, Canara Bank, Bank of Baroda looking good. On the daily chart, Bank Nifty is still traded within a 14 September candle range, which is a 14,288 and 41,626 level. So now 14,000 is the immediate support for the Bank Nifty, while 41,800 and 42,000 will be the resistance zone for the upside. So now on the derivative front, Nifty future OI saw a short covering, which is around minus 4.01%, reduction of 0.55 million shares, with outstanding position currently stands at 12.94 million shares. Advanced decline ratio was negative, 19 stock on the gaining side and 105 stocks on the losing side. Yesterday Nifty PCR OI saw an uptick at 0.94. If we compare previous closing, then previous closing is 0.76. Major addition happened in the put option front at 17,300 and 17,500 strike, and call option front major unwinding seen at 17,800 and 18,000 strike. So overall, if we see the FII data, FII futures added a long position by 12,941 contracts, but overall net shorts is still minus 45,373 contracts. So FII future long short ratio is a 31.91%. So that's it from my end. Now I will hand over to Varun sir for further research update. Thank you and over to you, sir. Thank you very much, Kshitija. So from research side, first on City Union Bank, so we have initiated coverage on this company. We understand that it is one of the old private banks of India, which has reported a very stable and consistent performance during pre-COVID period of FY15 to 19. So return on assets during that period was close to 1.5%, which was backed by 16% loan CAGR during FY15 to 19 and stable GN gross non-performing assets at 2%, 2 to 3%. COVID has impacted asset quality of the company, and which has led to lowest ever return on assets of 1% in FY20. We expect ROA to improve towards 1.5%, backed by 15% loan CAGR over next 2 years. Stock trades at attractive valuation of 1.7 times FY24 price to adjusted book value. We initiate with a target price of 230, valuing the company at 2.2 times FY24 price by book value, which is kind of average valuation during FY15 to 20. So key positives for the companies are stable asset quality and credit growth in high teens. Next update is on Marico. So Marico expects volumes to grow from third quarter of current financial year, which should be driven by reducing raw material prices. However, inflationary pressures are likely to continue in 2Q FY23 due to high inventory cost, which was accumulated earlier. Management expects rural demand to increase in October and November of 2022. Marico targets to acquire more digital brands in coming 1 to 1.5 years. Currently, Marico has digital brands such as Beardo, Just Herbs, and True Elements. Next update is on Nestle India. So Nestle is in discussions to acquire Yoga Bar. So Yoga Bar is a nutritional snacks startup. Nestle has been targeting small deals in health and supplement space. Yoga Bar sells protein bars, muesli, peanut butters, whey protein, and gluten-free oats. Currently, this company is valued at 450 to 500 crores. Yoga Bar has recently held discussions with private equity firms to raise primary capital of roughly 200 odd crores. So we believe that this is a positive news for Nestle shareholders. Next update is on TVS Motors. So the company has launched and Torque 125 race XP scooter in Nepal. This scooter comes in a tritone color theme and will be offered at an introductory price of 3,05,000.
rupees in Nepal. A voice assist feature enable customers to engage with scooter through voice commands, and customers also have an option of choosing between two riding modes, race mode and street mode, with a top speed of 98 km per hour. So that's a positive news for TVS shareholders. Next update is on TCS. So TCS has announced that Israel's OFEK credit union has selected TCS Bank's platform to offer innovative digital banking services. OFEK Credit Union primarily provides credit to small business and has obtained license for banking. Deal size remains undisclosed. This is a positive development for TCS with respect to revenue from banking vertical, which so revenue from banking vertical overall contributes 30% to TCS total revenue. And last update is on media sector. So in April, Reliance and Viacom 18 had entered into a partnership with Bodhi Tree Systems, where Bodhi Tree and Reliance agreed to invest in Viacom 18. As a part of this deal, Jio Cinema OTT was supposed to be transferred to Viacom 18. Yesterday, CCI has approved the merger. With this approval, the transfer of Jio Cinema OTT to Viacom 18 is not expected to have any hurdles. This is a positive development for TV18, which contributes to around 90% plus of Network 18's revenue last year. So as this will help the company expand its viewership base and increase market share. Yeah, so that's it from my side. I now request Hitendra to please take over the call. Good morning, Tim. Few more news updates from my end. There's a news on advanced enzyme technology. Nalanda Indian Equity Firm acquired additional 29,11,630 equity shares, which is 2.6% stake in the company, via open market transaction at an average price of 270.03 per share. However, the advanced enzyme sold 25,73,500 shares, which is 2.3% shareholding at an average price of 270.04 per share in the previous. Next news is on C8. The company said the board of directors has allotted non-convertible debentures, which is NCD, on a private placement with for the rupees of 150 crores. Next news is on Bombay Dyeing. The company said the board of directors on September 22 will consider a proposal of raising of funds by issue of equity shares on right basis. Hudson Agro, the company has received approval from the board for its right issue up to rupees 400 crores. One more update on Ircon International. The stock will be in focus as the company has received work order of detailed engineering and project management consultancy service for development of rail infrastructure for Ananta OCP of Jagannath area at Talcher from Mahanandi Coalfields. So the total work order book is 256 crores. Next news is on Butterfly Gandhimati, promoters of Crompton Greaves Consumer Electricals is going to sell 10.72 lakh equity shares or 6% stake in the subsidiary via offer for sale on September 20 and 21st. The floor price for the sale will be rupees 1370 per share. Next news is on future supply chain of solution. The company has called off proposal to sell or dispose of warehouses assets and has decided to explore other opportunities for rehabilitation of business operation. One more update is on IFCA. The company said that the board of directors will meet on September 27 to consider the preferential issue of equity share to Government of India. This is subject to the approval of shareholders and the stock exchange. One last news update on V-Mart Retail. Amansa Holding Private Limited has acquired 288 shares, 299 equity shares in the company at an average price of 2,914.99 per share. However, the Plex Wealth Management LLP sold 3 lakhs of shares at an average price of 2,915 per share. So that's all news update from my side. I will hand over to Prabhakar sir for more updates. Thank you.